Hello everyone, this is Sumit and welcome to PETROGATE PYQ series, and today's session we will discuss the offshore questions which has been come in GATE 2019. Okay, so I think 3 to 4 question is there that asked into GATE 2019 from the offshore subject. So we are seeing that particular questions here. Okay, so no problem. So we are starting. Okay, chaliye. So बहुत बढ़िया. This is the question. So you can see on the screen which one of the following provides a vertical stab for the flow lines and annular axis lines from multiple wells in offshore subsea completion. तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा बोला गया है कि मेरे पास नंबर ऑफ वेल से जो फ्लूइड आ रहा है, सो मैं उसको किस तरीके से लेता हूं और देन मैं उसको किस तरीके से एक जगह इकट्ठा करता हूं, हाउ आई विल एक्वायर ऑल द फ्लूइड विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट वेल. ओके, एंड आफ्टर कलेक्टिंग दैट फ्लूइड इन वन लोकेशन दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम द सरफेस, ओके, बाय द राइजर. नो प्रॉब्लम. सो दैट विल मीन्स you can say कि annular axis or multiple wells in offshore, or he is telling also what he is telling means subsea completion. Subsea completion means, sir, I am not getting, means he is telling us subsea completion means there will be completion of well complete I am doing in, and whatever the tool I am using to complete the well or well completion process, and the tool is at the seabed. That is your what subsea completion. Okay, no problem. So now the question is that, sir, what about the first moon pool? So we will see all the options, okay, that is given, and accordingly we will select the right option. Okay, so now we will discuss all the points that is given in the option. So the first means moon pool deck. Moon pool deck means a hollow area in your vessels from your all the riser or tool is moving from deck to sea bottom. ओके, सो दिस इज द होलो एरिया. दिस इज कॉल्ड मून पूल. ये देखने में कई बार गोल होता है, तो ये मून जैसा है, तो इसलिए इसको मून पूल काइंड ऑफ थिंग बोल दिया गया. ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम. सो आई थिंक ये तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए. आई थिंक दिस इज नॉट द राइट आंसर, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट आई एम एक्सेसिंग मल्टीपल वेल्स इन ऑफशोर एंड देयर इज रिलेटेड टू सबसे कंप्लीशन ऑल्सो. देयर इज दैट ऑप्शन इज रिलेटेड टू सबसे कंप्लीशन. मीन्स वो टूल, वो इक्विपमेंट जो लगाया गया है वेल को कंप्लीट करने के लिए, वो भी सबसी पे, तो दैट इज योर सबसी कंप्लीशन. तो इसका मतलब ये तो भाई सरफेस पे है, ये तो डेक पे है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए ना राइट आंसर में. सो दैट इज नॉट द राइट आंसर. ओके, दिस इज योर डेक, दिस अरेंजमेंट इन योर डेक और योर वेसल्स. सो आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम सर्चिंग फॉर द ऑप्शन विच इज योर सबसी, विच इज इक्विपमेंट और एट सबसी. ओके, नाउ नेक्स्ट मीन्स स्पाइडर बीम. सर, स्पाइडर मीन्स मतलब सर वॉट एवर द पाइप और राइजर यू आर हैविंग, ओके, एंड देयर विल बी डिफरेंट राइजर एसेसरीज वी हैव इंस्टॉल्ड. I am telling you, riser is nothing but, suppose this is your vessels and this is your vessels and this is your seabed and this is your well. No, you can see, or you can say number of well you are having, and the fluid is collecting at one location, and that is your producing in this particular way. Okay, so now your fluid is producing, so that fluid is moving from seabed to your deck or your vessels with the help of riser. With the help of riser. Riser नाम इसलिए कि ये किसी चीज को राइज करेगा फ्रॉम सी बेड टू डेक एरिया तक. ठीक है, तो ये राइजर है जो किसी को राइज करने में हेल्प करता हो, तो वो राइजर हो गया. है ये सिंपल पाइप ही. दिस इज ऑल्सो सिंपल पाइप. ओके, इसका कोई स्पेशल काम नहीं है, या स्पेशल कोई ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नॉर्मल, इसको ट्यूबिंग बोल दो आप, इसको केसिंग बोल दो आप, सिंपल है, पाइप ही है नॉर्मल. बट ये यहां पे जो काम कर रहा है, किसी चीज को उठाने का काम कर रहा है, दैट मीन्स आई एम टेलिंग इट्स ए राइजर. इट्स मेकिंग ए राइज समथिंग. ओके, सो नो प्रॉब्लम. तो यहां से चीजें मेरी ऊपर उठ रही है, कोई बात नहीं है. ठीक है, और इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए यहां पे मैं नंबर ऑफ एसेसरीज लगा देता हूं. वो एसेसरीज मेरी कई बार टेलीस्कोपिक जॉइंट होता है, फ्लेक्स जॉइंट होता है, डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, जिससे मेरा वेसल्स अगर इधर उधर थोड़ा बहुत हिले भी, तो मेरा ये राइजर पाइप ब्रेक ना हो. दैट राइजर पाइप विल नॉट ब्रेक और डिस्कनेक्ट इफ योर वेसल्स मूविंग लिटिल बिट बिकॉज ऑफ वेव एंड करंट एंड वेट. ओके,
इतना समझ रहे हो? सो आई एम डूइंग सम फैसिलिटी हेयर दैट कैन बी कंपनसेट ऑल द मोशंस इफेक्ट बिकॉज ऑफ लाइक हेयर, लाइक सम फ्लेक्स जॉइंट लगा दूंगा, आई विल इंस्टॉल सम ये लगा दूंगा वगैरह वगैरह, ठीक है? चलिए, सो नो प्रॉब्लम. सो नाउ देयर विल बी ये हाउ दिस राइजर इज कनेक्टेड टू दिस वेसल, हाउ दिस राइजर इज कनेक्टेड टू दिस वेसल. एक्चुअली व्हाट हैपन, दिस राइजर इज कनेक्टेड बाय द विद द हेल्प ऑफ गिम्बल, विद द हेल्प ऑफ गिम्बल प्लस विद द हेल्प ऑफ स्पाइडर. तो वो स्पाइडर क्या करता है, इसको जकड़ के रखता है इस पाइप को, दैट इज कनेक्टेड टू स्पाइडर और दैट विल बी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर राइजर एंड दैट विल नॉट मूविंग हियर एंड देयर. ओके, तो ये इसको कनेक्ट करके रखता है और दिस वेसल इज रोटेटिंग लाइक दैट, दिस वेसल इज रोटेटिंग लाइक दैट, सो दैट विल दिस पाइप विल नॉट रोटेट. Okay, if this vessels, suppose this is the vessels is moving like that, so this pipe is not rotate. Okay, because of there is a spider kind of arrangement you are having, this is not rotating like that. Okay, this will rotate but this is not rotate. Okay, so now you will see gimbal. आजकल तो फोन में भी गिम्बल आ रहा है, समझ रहे हो ना? मैं आपको बताता हूँ, अभी कोई फोन लॉन्च हुआ था तो उसमें क्या था, कैमरे में गिम्बल काइंड ऑफ थिंग लगा हुआ है. मतलब जैसे आप कैमरे का आप भागते हुए रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपका कैमरा ऐसा हिलेगा, ठीक है? तो वो जो लेंस है वो नहीं हिलेगा, समझ रहे हो? हिलेगा जरूर बट कम हिलेगा. सो दैट मोशन ऑफ द लेंस विल बी स्टेबल, तो वो स्टेबल रहेगा, वो नहीं हिलेगा. तो उससे आपका क्या है कि भागते हुए या दौड़ते हुए आप जब ऐसे रिकॉर्डिंग करोगे किसी कैमरे से या फोन से, तो वो कैमरा स्टेबल, लेंस स्टेबल रहेगा, तो वो स्टेबल मतलब ऐसे वीडियो ऐसे हिलती नहीं बनेगी, समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर वेसल्स आपका हिलता है, ऐसे होता है, तो इस राइजर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो दीज आर द एसेसरीज ऑफ द राइजर. ये एसेसरीज ऑफ द राइजर हम पढ़ते हैं, ठीक है? ये दिस राइजर एसेसरीज कैन बी आस्क कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व इन द राइजर बाय द विद द हेल्प ऑफ गिम्बल और टेलीस्कोपिक जॉइंट, स्लिप जॉइंट, फ्लैक्स जॉइंट, नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन सी. Okay, no problem. The thing is that, sir, this spider is just connected to this particular riser so that it can hold properly. Okay, so I think spider beam is not the subsea completion and this is not the right option here. Okay, no problem. So I will tell you, you can see these are the accessories. First spider, then gimbal, then telescopic joint or different point. Okay, no problem. So now next point is your telescopic joint. So telescopic joint means telescopic joint will be attached in like this is joint which is like there will be what I am telling you. Suppose there is a upper barrel or there is a lower barrel. Okay, so what happen when it moving? Suppose your ship is moving up and down. Okay, so what happen, this riser will be break because the length of the riser is constant or like fixed. So when your vessels is moving up and down, so this joint will increase the little bit height of the riser, and when the vessels is moving downward, and this height will be smaller because of this arrangement. Okay, like you have seen a bike shocker. Okay, your bike shocker may be smaller and that will larger. Okay, that compensate the motion of the up and down. Okay, this is also compensate the motion of your vessels. So this is also a telescopic joint or this is also called a slip joint. दोनों नाम इसी के हैं, ठीक है? तो ये मुझे पता है, तो आई थिंक यहाँ पे इसका भी कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा है. मेरे भाई मैनीफोल्ड के बारे में बात समझ लेते हैं. What about the manifold, sir? Manifold means this is your manifold which is stable at your seabed. Whatever the fluid you are having from different wells, that will be coming in this particular manifold, and this manifold your fluid will moving from manifold to your deck area, okay, or deck location, or you can say your processing plant, or many you can say vessels, you can say floating or production vessels, no problem. So your fluid is moving, so this means this can be access or different flow line and annular access also of the well, as well as it's a offshore subsea completion. Yes, it's a complete the well or which is stable at the seabed means subsea. Okay, so I think this will be your right answer. Okay, so it means we need some more, we need to remember or we have to study some tools that is generally used in your offshore, or because the question generally can be asked from there also. Okay, but होता क्या है कि मेरे पास different मेरे पास बहुत सारे offshore rigs हैं और वहाँ पे different tools हैं, और इतने ज़्यादा tools हो जाते हैं यार कि मुझे वो समझ में नहीं आते, ठीक है? इनफैक्ट वो किताबों से तो पढ़ के समझ में नहीं आते, ठीक है? जब तक मैं उसको चीज़ें
उसको मैं देखूं ना, आइदर मैं उसको नेट पे ना देखूं, आइदर मैं उसकी कोई वीडियो ना देखूं, आइदर मुझे कहीं फिजिकल जाके ना दिखे, ठीक है, तब तक मैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझना मेरे लिए किताबों से मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूं कि कुछ कॉमन टूल्स हैं मेरे पास जो मुझे पता होने चाहिए, ठीक है। हालांकि वो हमने लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन किताबों में भी मिल जाते हैं, 𝐂𝐨𝐻 सर की आप बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, उनमें काफी चीजें गिवन है, ठीक है। तो वो टूल थोड़े बहुत मुझे पता होने चाहिए। जैसे ये सारे टूल जो है कि कॉमन थे, जिनके बारे में मुझे हल्का पता होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि सर मुझे बहुत ज्यादा अंदर ट्यूब, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि इस मैनीफोल्ड के अंदर पता नहीं क्या क्या मैकेनिकल इक्विपमेंट है दैट इज यूजिंग, बट मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा। हाँ ठीक है, मैनीफोल्ड मुझे पता है कि ये ऐसा होता है, नंबर ऑफ मैनी वेल्स इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर टूल और इक्विपमेंट, सो वो मुझे पता है। लेकिन अंदर कितनी चीजें हैं वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर, समटाइम्स दैट इज योर पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, लाइक डिजाइनिंग पार्ट, ओके। बट स्टिल द कॉमन नेम्स मुझे पता होने चाहिए कि हाँ भाई ये इस चीज के लिए यूज होता है, इस चीज के लिए। तुमसे तो वो इतनी चीजें पूछेगा भी नहीं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नहीं पूछेगा भाई, ठीक है। चलिए, नो प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, we will see the next question here. The question is that, sir, which one of the following offshore platform does not use buoyancy column or buoyant column or pontoon? Pontoon, what happen pontoon? Generally pontoon or buoyancy column we will use which is your floating vessels. अगर मेरा वेसल्स बॉटम सपोर्टेड है, सपोज दिस इज योर वेसल्स एंड दिस इज योर कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ द सी, लाइक जैसे जैकअप रिग था, तो और लाइक एग्जांपल जैकअप रिग, सो देयर आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ pontoon because pontoon is just used to give the buoyancy upward so that your vessels can be in floating mode. जैसे कि तुम्हारा वेसल्स हमेशा तैरता रहे, तो उसके लिए मैं pontoon और ये buoyancy column वगैरह लगाता हूं, ठीक है। बट अगर मेरा कोई वेसल्स बॉटम सपोर्टेड हो, जो जमीन पे टिक जाता हो, सब सरफेस उसके लेग्स आ जाते हो, तो मुझे क्यों तैराना फिर अपना वेसल्स? आई एम नॉट थिंकिंग कि सर मुझे ये वेसल्स तैरना है या मेरा वेसल्स को मतलब मुझे तैरा के रखना है, नहीं, वो बॉटम सपोर्टेड है तो बस वो टिका रहेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो नाउ आई विल सी द ऑप्शन कि विच इज योर बॉटम सपोर्टेड वेसल्स और बॉटम सपोर्टेड रिग्स यू आर हैविंग, बिकॉज इन बॉटम सपोर्टेड रिग्स यू डोंट required pontoon, you don't require buoyancy columns, and that will be your right answer because he is talking the platform does not use buoyancy column. Okay, so now see which is your bottom supported. Okay, the first one is your what? Tensile leg platform. So tensile leg platform picture is this, you can see. Now you will say sir this is your bottom supported, I think. No, this, if you will read the definition or your main concept of your like TLP means tensile leg platform, TLP or tensile leg platform, so you will see there is a buoyancy or pontoon also, or like buoyancy column or pontoon, and this buoyancy will be very very higher. You will see buoyancy will be very very higher as compared to weight of this particular vessel, so that this vessel is try to move upward and upward, and these mooring lines, these are the mooring lines my dear. You will not say that these are the legs that will be set at this particular bottom and this is your bottom supported. No, these are the mooring lines. So you will see, suppose your mooring line will be like that, okay, but your buoyancy is higher, means this vessels try to move upward as much as can, okay. So this mooring will be in tension form, okay, in tension, so that's why it's look like a legs, but that is not the legs. So I will tell you, because there is a pontoon, I am telling you यहाँ pontoon है, तो ये ऊपर तैरेगा, buoyancy लगेगी, और इतनी buoyancy लगेगी TLP में बहुत ज्यादा, जिससे मेरे जो mooring है वो टेंशन में रहेंगी हमेशा की हमेशा, और मुझे वो legs जैसी दिखाई देंगी, बट वो legs नहीं है, वो bottom supported नहीं है, वो ऐसा टावर नहीं है जो जमीन पे टिका हुआ है और उस टिकने की वजह से वो चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो इनको मैं बोलता हूं, इसको बोलता हूं टीथर, एक लेग्स को मैं बोलता हूं टीथर, मींस वन mooring line is called teether and the group of teether is called tendons. This is also an important question, okay, means this teether will use in TLP and the group of teether is called tendons. You will see this is circle, group of C, this group of these lines is called tendons, okay, no problem. So there is a pontoon, definitely यहाँ पे buoyancy लगने वाली है, तो it means there is a buoyancy column यहाँ पे है, तो it means ये ऑप्शन तो राइट नहीं है, because I want to see which does not contain your buoyancy column or your pontoon. मुझे उसकी तलाश है, लेकिन ये तो रखता है, तो this is not the right answer. Next point is
जैकब रिग में आपको पता है, जैकब रिग्स यू नो वेरी वेल, इट्स ए बॉटम सपोर्टेड रिग. यू विल सी द legs will be set at the bottom and then the stability this vessels is achieved. Okay, so now you will see the bottom supported. I think this is the right answer because there is a no floating or no pontoon or no buoyancy column. Why? Because there is a no required. ये bottom supported, ये धरती पे टिक जाएगा, मुझे इसको buoyancy देने की रिक्वायर ही नहीं है. तो stability जो इसमें मुझे मिल रही है, whatever the stability I am getting in this particular vessels in Jacob rigs, that will be achieved by the bottom supported. Okay, no problem. Next, spar is also a floating vessels. You will see in the pic in in the internet, if you will type spar, you will see that is your floating vessels. Okay, no problem. If floating vessels, so definitely buoyancy column or pontoon will be there, and this is the large pontoon you will see. No problem. Okay. So next option you can see the semi-submersible. In semi-submersible, the semi-submersible is a floating vessels. Means you will see the pontoon, you will see the buoyancy columns. These buoyancy and pontoon जो हमको इसको vessel को तैरा के रखती है, ठीक है? I think you got it. So I think the right option will be jackup, जो कि मुझे buoyancy और pontoon नहीं चाहिए इन जैकअप में, और बाकी की वेसल्स जो भी यहाँ पे गिवन है उनमें मुझे चीजें चाहिए ही चाहिए. ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट ना. चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आंसर विल बी बी, जैकअप रिग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यू विल सी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफशोर प्लेटफॉर्म द कंडीशन ऑफ द सी फ्लोर इज ए विटाल कंसिडरेशन. ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट कि इनमें से कौन सा ऐसा वेसल्स है विच इज द वेसल्स यू आर हैविंग इन द ऑप्शंस दैट इज रिक्वायर्ड विटाल कंसिडरेशन ऑफ द सी फ्लोर. ओके, मुझे सी फ्लोर में बहुत ज्यादा कंसिडरेशन चाहिए यार, वो सही है या नहीं है, वो टिल्टिंग तो नहीं है, वो ऐसा वैसा सी फ्लोर तो नहीं है, तो मुझे वहां पे अच्छा खासा कंसिडरेशन चाहिए. इनमें से कौन से वेसल्स में? तो सिंपल सी बात इज दैट द सिंपल थिंग इज दैट कि सर विच वेसल्स इज फ्लोटिंग, जो वेसल्स मेरा फ्लोट करके रहता है वहां मुझे अपने सी बेड की कोई टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं. If the vessels is in floating mode, so is there any need to take tension, any kind of consideration of your sea floor? No. So just tell me which is the vessels you are having in the option which is not the floating. तो जो भी फ्लोटिंग नहीं होगा उसी के लिए मुझे अपनी एक सी बेड की टेंशन लेने की जरूरत है, या सी बेड का कंसिडरेशन देखने के लिए जरूरत है. ठीक है, तो नाउ यू विल सी ड्रिल शिप इज योर फ्लोटिंग वेसल्स. सो नाउ यू विल सी ड्रिल शिप इज योर फ्लोटिंग वेसल्स. सो दैट्स व्हाई आई डोंट टेक एनी कंसिडरेशन ऑफ योर सी बेड. सी बेड आपका कैसा भी हो ये काम करेगा, बिकॉज इसको सी बेड से कोई मतलब ही नहीं है. नो प्रॉब्लम. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट टेंशन leg platform. Tension leg platform you will see, yes, tension leg platform also your floating. So that means हालांकि यहाँ पे मुझे जरूरत रहेगा, हालांकि मुझे थोड़ा सा जरूरत रहेगा कि मेरा सी फ्लोर सॉफ्ट तो नहीं है, मेरी ये टेंडन्स निकल तो नहीं जाएंगी, समझ रहे हो? यहाँ पे मुझे थोड़ा जरूरत रहेगा. इट मीन्स लिटिल बिट कंसिडरेशन आई विल सी, बट नो प्रॉब्लम. मे बी दिस विल बी राइट आंसर और मे बी नॉट द राइट आंसर. आई एम नॉट सेलेक्टिंग द राइट आंसर है. ओके, बट हाँ, लिटिल बिट कंसिडरेशन मुझे यहाँ पे रहेगा. ठीक है, कई बार क्या होता है कि these are the not the like soft form, these are the soft formation, so because of buoyancy these tendons will remove or retrieve from the subsurface. Okay, next question is that next option is concrete gravity. Yes, I think this can be the right, or this can be the more right as compared to this, because this is bottom supported. All the part of this particular vessels is your bottom supported. Means this will be, if this seabed or your seabed is tilting, so this can be a problem. If seabed is tilting, so that's not a problem. You will see the greater length of tendon, no problem. But now this is the right answer, I think. Okay, next is floating, production, storage and offloading. Means this is also floating. So which vessel is floating? So there is no need to see or any concern about the seabed. Okay, so I think right or most appropriate answer is your concrete gravity, because this is just settled down on the seabed. So मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग रखना पड़ेगा कि यार seabed देख लो अच्छा है या नहीं है, तभी मैं ये लगाऊंगा, बिकॉज इसका सारा जो भार है, सारा वेट है, सारी चीजें स्टेबिलिटी की मेरी वेसल्स को जमीन पे रखने के बाद ही मिलती है. तो भाई ये मेरे लिए ज्यादा सही होना चाहिए. ठीक है, चलिए, तो राइट ऑप्शन विल बी सी, कंक्रीट ग्रेविटी प्लेटफॉर्म. Okay, and concrete gravity platform also can be can deep.
Candy platform. Okay, platform you can write here. No problem. So can I move forward? Okay. So now the next question is that match the following question. Okay, no problem, sir. No problem. Okay, you have the table, this table in the gate, and we will read these lines and accordingly we will match the following. Okay, no problem. And मैंने कई बार बोला है कि match the following बच्चों के गलत होते ही नहीं है. ठीक है, देख लेते हैं. We will see. So self-contained. First point is that self-contained drilling rig on a floating barge fitted with long supported legs that can be raised or lowered independently of each other. ओके, सो ही इज टेलिंग मी कि वहां पे कुछ ऐसा लेग जैसा है और जो मेरा जो वट एवर द यू आर हैविंग डिफरेंट लेग्स एंड वट एवर द डेक दैट कैन बी ओपन एंड लोअर, तो दिस कैन बी पॉसिबल इन वॉट, इन जैकअप माय डियर, in jackup. Okay, DPS is not the right answer, mooring is not the right answer, this is the drilling rig. So drilling rig may be this or this. So this is your floating, this is your there will be a legs, so I think this will be the right option. So I think R goes to 1, R goes to 1. I think this is the right answer, this is the right answer because R goes to 1, R goes to 1. No problem. So we will see the next. A system which automatically control a vessel's position heading exclusive by means of active thrust. Okay, so I am telling you DPS dynamic positioning system. This is your a system which contains thruster and propeller. Okay, thruster and propeller. With the help of these, the vessels, if moving here and there because of external forces, maybe current, maybe wave or maybe wind. So that suppose the current is moving this direction, listen, current is moving this direction and your vessels moving this way. Okay, but I don't want कि vessels moving here and there because I am doing drilling or production. Okay, so thruster and propeller will read the forces whatever acting by the current. ये जो थ्रस्ट है ये मेरे रीड करेंगे फोर्सेस को जो मेरे करंट से, विंड से, वेव से मिल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग उतना ही फोर्स उल्टा डायरेक्शन में दे देंगे भाई, तो जिससे कि मेरी वेसल्स वापस आ जाए. तो जैसे भी वेसल्स मेरी इधर उधर मूवमेंट में आएगी ऐसे ही मेरी वेसल्स को थ्रस्टर एंड प्रोपेलर उसको वापस ले आएंगे. ठीक है, यही काम होता है उनका भाई का. ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल ए वेसल्स पोजीशन एंड हीटिंग एक्सक्लूसिव बाय मीन ऑफ एक्टिव थ्रस्ट. तो आई थिंक ये हो गया डीपीएस. सो पी गोज टू सेकंड, पी गोज टू सेकंड. आई थिंक P goes to second, P goes to second, P ये think this. So this is the right option I think. But फिर भी हम आगे की चीजें भी देख लेते हैं. हालांकि मुझे right answer मिल गया है, but let's see for more option. Okay, no problem. Next is what remains afloat by weight and buoyancy balance. Okay, which is the vessels which is floating mode. Okay, it means this vessels has the balance of weight and buoyancy. That's why it's floating mode. So that is your semi-submersible. It means S goes to third. It means S goes to third, no problem. Next means a system that is used to station keeping of floating platform or ship at any depth. Suppose this is your ship, my dear, and I want to make it in station keeping, means I don't want to this vessels to move here and there. So I want to keep these vessels at a stable or at a one location. So that can be possible by mooring. Okay, so it means mooring, it means 4 goes to Q, 4 goes to Q. So I think this is your right answer. So now you will see some more picture, my dear. You will see more picture. This is your, I think the right C option is there. Okay, so you can see the jackup rig. Okay, now no problem. And this is your semi-submersible. Okay, so I think you know very well. So semi-submersible, how the semi-submersible is balanced because of weight and buoyancy. Okay, no problem. Because of weight and buoyancy. That's why S goes to third. That's why S goes to third. Okay, no problem. चलिए, so now this is all about today, and these are the questions that has been asked from the offshore technology in GATE 2019. Okay, so we will see the next session, the questions which has been asked from the offshore in GATE 2020. Okay, so thank you very much. Have a nice day.